Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with exercise 14.2. So the name of the chapter is factorization. Chapter number 14, class 8. So we have already done exercise 14.1 in our previous videos. So in this video we are starting with exercise 14.2. Also children, we have done all the introduction videos of this chapter as well. Okay, so starting with exercise 14.2. Question number 1 says factorize the following expressions. Okay, so the first part is a square plus 8a plus 16. Yes, so we have to factorize these expressions. Also children, we have done 4 methods of factorization in our introduction video. The first one was common factor method. The second one was regrouping the terms. The third one using the identities, and the fourth one middle term splitting. In common factor method we have to take common from all the terms. अगर हम common factor इसमें apply करें, so do you think anything is common between all the 3 terms? A is not there, right? 8, 16, but no number is there. So it means that anything is not common between the all the 3 terms. 2 terms में से तो common आ जाएगा, but तीनों terms में कुछ भी common नहीं है. It means common factor method cannot be applied. Okay. Now let's come to regrouping terms. अब regrouping terms 4 जब हमारे पास terms होती है, so we can apply that regrouping terms method, जिसमें हम 2 terms के groups बना के then we take common. So वो भी apply नहीं हो सकता. Now as we can see we have a square here and यहाँ पे 16 है जो हमारे पास b square भी बन सकता है. So a square b square, और अगर ये 2ab बन जाए, so yes we can solve this part from identities. हम identity apply करके इस part को solve कर सकते हैं. Okay, so we have one identity which says a square, sorry, a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, right? And we have one more identity which says a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. And children, I have already told you that these identities can be applied vice versa. If this part is given, we can apply this part, RHS, and if RHS is given, we can also apply LHS. Okay, so these can be used vice versa. So in this question, as we can see, this is a square, right? It means this a is a, ये इसमें a है, and this 16, this is b square. ये पूरा a square है, ये पूरा b square है, तो ये है 2ab. अब यहाँ पे हम प्लस वाली आइडेंटिटी लगाए या फिर माइनस वाली, so that will depend on this sign. and ये वाला साइन यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है, it means फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी a plus b whole square. So this will be a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square, right? So it means a square, a है हमारे पास, a ही है, a is a only, plus 2 में से plus 2 as it is, a is
a and b क्या है, b है 4 because b square is 4 square, it means b is 4. So हमने अभी इसको एक्सपैंड करके LHS की फॉर्म में तो लिख दिया. अब हम इसको आंसर निकालने के लिए इन ऑर्डर टू फैक्टराइज व्हाट वी कैन डू, RHS की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. अब इन ऑर्डर टू फैक्टराइज वी कैन फॉर्म दिस इन दिस फॉर्म a plus b होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. 2ab देखो 2 4 सा 8, 8a आ रहा है. ठीक है, सो इसको हमने एक्सपैंड करके लिख दिया. अब हम इसको a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में वी कैन write this. So it means this is the answer. And also children, इस आंसर को हम a plus 4 2 times ऐसे करके लिख सकते हैं. This would be the answer because suppose we have x square somewhere, तो हम उसको x into x लिख सकते हैं ना. That is why मैंने a plus 4 whole square को a plus 4 लिख दिया. All right. So this was the first part children. इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई करी. लेट्स रिकॉल. देखो द फर्स्ट पार्ट वाज a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. हमें यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है एंड वी नो दैट 16 वुड बी b स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर किसका होता है, 4 का. सो इट मीन्स 16 विल बी 4 स्क्वायर. सो b स्क्वायर भी है, a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2ab भी है. सो इट मीन्स वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर. सो a प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया बिकॉज a इज दिस. ये a है यहाँ पे अभी और ये b है. ठीक है, सो ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर. सो a प्लस b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b a प्लस b. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. When we'll factorize a square plus 8a plus 16, we will get a plus 4, a plus 4. Okay, so this was the first part of question number 1. Now moving to part number 2. Now let's move to part number 2 children. The second part is p squared minus 10p, p squared minus 10p plus 25. So again we know that this is p square means यहाँ पे a square भी है and 25 would be 5 square. So b square भी है and minus 2ab भी है because we have minus sign. अब यहाँ पे minus का sign है, it means a minus b whole square can be applied. So this will work as a square and this will work as b square and this will work as minus 2ab or we can say just 2ab. ठीक है, तो अब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है, सो a इज p स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, a इज p, b इज 5 होगा b क्योंकि यहाँ पे होगा b स्क्वायर 5 स्क्वायर. सो b वुड बी 5. तो ये हमने एक्सपैंड करके लिख दिया. नाउ वी कैन राइट दिस एज a माइनस b होल स्क्वायर. सो p माइनस 5 होल स्क्वायर. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज p माइनस 5 p माइनस 5. सो दिस इज द आंसर p माइनस 5 p माइनस 5. ऑल राइट, सो वी डिड द सेम थिंग. बस यहाँ पे अब माइनस का साइन था. सो इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी अप्लाइड विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a इज p. ठीक है, तो इसकी जगह पे a की जगह पे आएगा p. दिस इज a एंड नाउ b इज 5.
because we had 25 here. 25 होता है 5 का स्क्वायर. It means b is 5. So a minus b whole square होता है. We have a minus b whole square in the LHS. तो वही हमने अप्लाई कर दिया एंड उसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं बिकॉज it is p minus 5 raised to the power 2. Okay, so when we will factorize p square minus 10p plus 25, we will get p minus 5, p minus 5. Alright, so this was the second part of question number 1. Now proceeding to part number 3. So now let's start with the third part. So the third part of question number 1 is 25m square plus 30m. 25m square plus 30m plus 9. Okay, so 25 we have 25 children. 25 5 का स्क्वायर होता है. So 5m whole square. Now if you are thinking कि यहाँ पे तो already 25m का स्क्वायर है, so you are wrong because यहाँ पे स्क्वायर सिर्फ m के साथ है, 25 के साथ नहीं है. This is 25m square. Okay, not 25m whole square. Okay, so this can be written as 5m whole square. जब हम इसको 5m whole square लिखेंगे so answer would be 25m square only. ठीक है, so this can be written as 5m whole square and this can be written as 3 square. Right, so basically हमारे पास अभी भी what we have, this is a, this is b and this would be 2ab. ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab होगा. अब फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे या सेकेंड आइडेंटिटी, दैट वुड डिपेंड ऑन दिस साइन. दिस इज अ पॉजिटिव साइन. इट मीन्स a plus b whole square would be applied. So a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Alright, so a square, a would be 5m whole square. So 5m जो है ये हमारे पास a होगा because a square is 25m square, right? So a square plus 2 as it is, a is 5m. b अभी देखते हैं क्या होगा, b would be 3 because 9 है हमारे पास and that is the square of 3. So 3 square is 9, right? So b would be 3 now. अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. 30m आ रहा है, so 5 2s are 10 and 10 3s are 30. So 30m, right? So आप ऐसे चेक भी कर सकते हो when you are expanding and you are applying some identity. So you can check also that हमारा बीच जो मिडिल वाली टर्म है वो as it is आ रही है या फिर नहीं, because यहाँ तो स्क्वायर ही किया, ये तो परफेक्ट है. This you can check. So now अब ये now we have expanded this. Now a plus b whole square. So a is 5m. This is a and this is b. So a plus b whole square क्या होगा? 5m plus 3 whole square. This would be the answer. So we can write this as 5m plus 3 and 5m plus 3. Why? Because square है, raised to the power 2 है, so 2 times हम लिख सकते हैं, right? So 5m plus 3, 5m plus 3 is the answer. So you see how we use the identities to solve and factorize the expressions. 25m square था, so ये square सिर्फ m के साथ है, so 5 को भी हम 25 को भी हम 5 लिख सकते हैं and whole raised to the power 2 लिख सकते हैं. Similarly 9 can be written as 3 square. ठीक है, so अब इस
इसमें अप्लाई कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. So that would give us a plus b whole square. So 5m plus 3 whole square. So 5m plus 3, 5m plus 3 is the answer. Okay, so this was the third part of our question number 1. Now let's come to part number 4. Now, fourth part of question number 1 is 49y square plus 84yz. Yes, and plus 36z square. Now again see 49 is the square of 7. So अभी जो हमारे पास ये स्क्वायर है ये जस्ट y के साथ है. It is not with 49. Okay. So we can write this as 7 square y square. So 7y whole square लिख देंगे इसको. Right. This would work as a square and this would work as b square. Why? Because 36 is a square of 6. So 6 square z square. So 6z whole square. Right, this is a square, this is b square, and this will work as 2ab and that too positive. So first identity will be applied, a plus b whole square. So identity is a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. Right? So ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम. सो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 7y होल स्क्वायर. दिस इज a, राइट. 7y इज a here. ओके, बिकॉज 7y स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49y स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 एज इट इज. a इज 7y. b क्या है अभी देखते हैं. b वुड बी 6z बिकॉज 6z होल स्क्वायर होगा यहाँ पे. सो b इज 6z. अब चेक करते हैं मिडिल वाली टर्म 84yz आ रही है या फिर नहीं. सो yz तो आ रहा है. ठीक है, 7 6 42 and 42 2s 42 2s 2 2s 4 4 2s 8 84. So yes, we got 84yz. It means हम अभी तक हमारा आंसर परफेक्ट करेक्ट है. सो अभी हमने एक्सपैंड करके लिख दिया. नाउ this is 7y is a and 6z is b. Okay, so a plus b whole square में convert करना है अब हमें इसको. So this would be 7y plus 6z whole square. ठीक है, so this is 7y plus 6z, 7y plus 6z. 2 times लिख देंगे because we have raised to the power 2. So it means this is the answer, 7y plus 6z, 7y plus 6z. Alright. So what basically in every part we are doing the same thing. Whether we are applying a plus b whole square or we are applying a minus b whole square. So we can factorize an expression using the identities very easily. It's just that हमें ये पता होना चाहिए उसमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी एंड कैसे हम उसको किसको a स्क्वायर लेंगे किसको b स्क्वायर लेंगे. वी शुड नो दी स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स. लाइक ये 7 का स्क्वायर होता है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 6. दैट इज द ओनली वे वी कैन सॉल्व दैट. अब ये हमें पता था a स्क्वायर है, दिस इज b स्क्वायर. सो ऑटोमेटिकली दिस वुड बी 2ab. बट अब ये जो 2ab है ये पॉजिटिव है. सो दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग आइडेंटिटी नंबर 1 and we solve this expression. So our answer is 7y plus 6z, 7y plus 6z. Alright, so this was our fourth part of question number 1.
Now let's come to the fifth part. So the fifth part of question number 1 is 4x square minus 8x plus 4. 4x square minus 8x plus 4. Alright, now we have to solve this expression. We know that this is 4 and this is a square of 2. So we can write this as 2a whole square. 2 square x square would be 2x whole square. So it means this would work as a square, right? And this would be b square because ये भी 2 square है, ठीक है? So automatically ये हो गया हमारे पास 2ab. But right here 2ab जो है that is negative. यहाँ पे positive नहीं है, this is negative. It means we'll apply the second identity which says a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, so अब हमारे पास 2ab negative है, so we'll get 4 would be 2x whole square, right? So 2x is a here. Okay, 2x whole square हो गया 4x square, ठीक है? b square हो गया 2 square, ठीक है? So अब हमारे पास है minus 2 as it is. a is 2x, b is 2. Let's check minus 8x आ रहा है. So 2 2s are 4, 4 2s are 8x. 8x negative. Yes, it means our answer is right. अब तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं. ये सॉल्व करके minus of 8x ही आ रहा है. So it means a square minus 2ab plus b square. This is a minus b whole square. So we'll be getting, this is a, children, 2x is a and 2 is b. Okay, so we'll be getting 2x minus 2 whole square, a minus b whole square. This is 2x minus 2, 2x minus 2. So this is the answer. 2x minus 2, 2x minus 2. Okay, so again we did the same thing. It's just that यहाँ पे minus negative sign था, so a minus b whole square apply करी and we get a minus b whole square as 2x minus 2 whole square. So 2x minus 2, 2x minus 2. Okay, so this was the first part of question number 1. Now let's proceed to this was the fifth part of question number 1. So now let's proceed to part number 6. Coming to sixth part of question number 1 now. So basically children, in this question we are solving the expressions using identities. Using identities. Alright, अभी हमने exercise 14.1 में we did factorization using common factor method and regrouping the terms. So in this exercise, first question is about using identities. So now the sixth part of question number 1 is 121 b square minus 88 bc minus 88 bc plus 16 c square. So now we have this expression. In this expression also, अगर हमें square पता है, so it is very easy. 121 is the square of 11.
and 16 is the square of 4. We all know that. So 121 11 का square है. So this is 11b whole square हो जाएगा because अभी तो square सिर्फ b के साथ है, right? So 11b whole square and 4c whole square. What does this mean, children? This is a square and this is b square. So automatically this is 2ab, right? अगर हमारे पास a square आ गया and b square आ गया, so आप समझ जाओ कि हमें identity apply करनी है. ओके, सो a square आ गया 11b whole square, b square आ जाएगा 4c whole square. So यहाँ पे negative sign है, it means second identity will be applied. a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. All right, this identity would be applied. Now a square, a is 11b whole square, right? 11b whole square a square है minus 2 as it is, a is 11b. b क्या है अभी देखते हैं, ठीक है? b is 4c whole square, right? So b है हमारे पास 4c. a is 11b and b is 4c. This is a and this is b. I hope this is clear. Don't get confused कि b तो इधर है फिर b यहाँ पे क्यों है. ये तो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, राइट? अंदर कुछ भी हो, वी नो दैट ये a स्क्वायर है पूरा और ये पूरा b स्क्वायर है. सो 11b इज a स्क्वायर. 11b मीन्स a एंड 4c मीन्स b. ओके, तो a है हमारे पास, b है एंड वी हैव नेगेटिव साइन. इट मीन्स दिस वुड बी a माइनस b होल स्क्वायर c. ये ठीक है. सो a इज 11b minus b is 4c whole square. This is the answer, but this can be written as 11b minus 4c and 11b minus 4c. Why 2 times? Because we have 11b minus 4c raised to the power 2. So we can write this 2 times. Okay. Yes, so this was our part number 6, children. So our answer is 11b minus 4c, 11b minus 4c. Alright, so in this question also, children, we did the same thing. a square minus 2ab plus b square. Why minus? Because यहाँ पे minus है, ठीक है? We will always see 2ab के साथ कौन सा operation है. That operation will decide that हमें कौन सी identity apply करनी है. Alright, so this was part number 6, children. So when we will factorize this expression, we will be getting 11b minus 4c, 11b minus 4c. Okay, so now let's proceed to the 7th part of question number 1. So children, 7th and 8th part we will be discussing in our next video. Okay, so stay tuned for my next video. In that video we will be continuing with this question only, question number 1, part number 7 and 8, and then starting with question number 2 immediately. Okay, so if you still have any doubt, any problem in this any part of question number 1 or the previous exercise, you can write in our comment section below. And don't forget to like and share this video. Thank you.